गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा बीएससी सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 4 गोटे नुआ चैप्टर जोटा हूँ आमर प्रायन्स। तो या पूर्वर मु भाइरस भिरियन भिरोइड रो डिफरेंशिएशन ता विषय में पढ़े सारी। तो जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देवी से मैंने कोर पेपर 3 और कोर पेपर 4 संपूर्ण नोट पाइबे। तो आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसो। जो मैंने नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। तो देखा आम प्रायन्स कौन ता विषय जाना। तो देख इन 1982 स्टानले बी प्रूसिनर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया इन सैन फ्रांसिस्को published an article in the Science demonstrating purification of the scrapping causing agent and he described a protein है। तापरे प्रूसिनर wrote in the article because of the novel properties of the scrappy agent distinguish it from viruses, plasmid and viroid, and new term prions was proposed to denote a small proteinous infectious particles which is resistant to inactivation by most procedure that modified nucleic acid। तो बेसिकली सी कौन कले देखिले जोटा हूँ आमर कौन ना सेटा आमर भाइरस रे जीवो ना प्लाज्मिड रे जीवो ना भिरोइड रे जीवो। तेणु ताको से गोटे नुआ टर्म यूज कले प्रायन जे कि बेसिकली गोटे प्रोटीनियस इनफेक्शियस पार्टिकल है। प्रोटीनियस इनफेक्शियस पार्टिकल माने कौन बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर तैयारी होची एवं जोटा कि मॉडिफाइड होची कौन न्यूक्लिक एसिड रु है। तो आपरे से कौन कले डिस्कवरी कले जोटा होची लेट टू हिम बीन अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज ताको नोबेल प्राइज रे पुरस्कृत करा गला। ठीक अछि। तो दिस स्मॉल इनफेक्शियस पार्टिकल इज द डिजीज कॉजिंग फॉर्म of the protein called the cellular prion protein PRPC। मन रख दो cellular prion protein है। तो PRPC is mainly found in on the तो को जगह मेनली एटा मिलता है देखो फास्ट हो देखो सरफेस ऑफ द सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अदर बॉडीली टिश्यू है। देखो ऑल द स्पेसिस रोल ऑफ द PRPC इज नॉट क्लियर। स्टडी सजेस्ट दैट दिस प्रोटीन प्ले ए प्रोटेक्टिव रोल इन द सेल एंड हेल्प देम रेस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जे कि आम रेस्पॉन्स करे केते जदि आम सेल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन रो अभाव है से से रेस्पॉन्स करी थाए। ठीक अच्छे। एवं बेसिकली आउ कोठी देखा जाए बेसिकली होची कोठी देखा जो सरफेस सेल रो सरफेस कोठी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो सरफेस रे देखा जाए एवं आउरी मध्य कोन टिश्यू गुडा करे मध्य देखा जाए। तो बेसिकली देखो एठी मु जोटा गत ये पढ़ाई तुमको भिरोइड और प्रायन्स रो किछिटा डिफरेंशिएंस रो तमे देखि पारुछ कंपैरिजन देखि पारुछ स्ट्रक्चर गुडाक। तो स्ट्रक्चर टाको टिके देखि दियो प्रीवियस क्लास में मु पढ़ाई है। देखो तुम स्क्रीनशॉट नहीं मत लिखिदेव ना मु ऑलरेडी तुमको शेयर कर दीची सेठू मध्य तुम पाइज। तो देखो प्रायन्स इज कंपोस्ट ऑफ abnormality फोल्डेन प्रोटीन दैट कॉज प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन with two of the most notable being जोटा जी बोविन स्पोंजिफॉर्म जोटा जी एनसेफालोपैथी है। तापर देखो जोटा कि होची मेड काउ डिजीज देखा जाए है। तापर देखो नेक्स्ट होची सीन इन कैटल एंड लाइफ स्टॉक एंड द क्रोजफेल्ड जैकब डिजीज जोटा कि CDJ सीन इन ह्यूमन। तो बेसिकली यही दुईटा प्रकार डिजीज देखा जाए है। दिस मिसफोल्डेड प्रोटीन डज नॉट मल्टीप्लाई इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म दैट दे इन्फेक्ट है। ये केबे भी मल्टीप्लाई करे नहीं बा ग्रो करे नहीं है। इंस्टेड दे अफेक्ट द ब्रेन स्ट्रक्चर बाय एक्टिंग एज ए टेम्पलेट ये टेम्पलेट करी थाए है एवं इंड्यूसिंग प्रोटीन विथ नॉर्मल फोल्डिंग टू कन्वर्ट
टू द abnormal prion form है तो नॉर्मल प्रोटीन नु ये तो टेम्पलेट करी abnormal prion को से जाई थे एवं हमको इन्फेक्ट करी थे है द नॉर्मल prion प्रोटीन इज दो to be made of the flexible coil refers to the alpha helix है but the abnormal folded form these helix are stretched out into the densely packed structure called the beta sheet तापर जतबे जदि ये abnormal fold को beta sheet कहलु किंतु normal fold हम को alpha helix बोली कहलु ठीक अछि तो नेक्स्ट देखो सेलुलर एंजाइम रेफर्स टू एज द प्रोटीज कैन ब्रेक डाउन the normal protein but prion protein are resistant to this and subsequently accumulate the brain tissue as they replicate है the infectious isoform of PRP known as the कौन आम कहूँ PRPAC है is able to convert normal PRPC protein into the infectious isoform by changing their conformation or shape. This turn alter the way of protein interconnect. PRPAC always cause prion disease है तो ये डिजीजटा को देता है बेसिकली एते किसी एते बुझीबा नहीं खाली तुमको माने कोन जी कोटा को प्रकार डिजीज हिते सेटा टिके तुमको जानिबार अछि हैला दिस न्यूली फॉर्म मिसफोल्डेड प्रोटीन इन टर्न एक्ट एज ए फर्दर टेम्पलेट फॉर the conversion of the more normal protein leading to the exponential accumulation of prion in the tissue and the central nervous system है तापर देखिबा प्रायन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैविंग नाइदर तार कौन डीएनए अच्छी नॉर आरएनए टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन not much in known about them but we do know that the prions is the abnormal or mutated form of a usually harmless protein है when this normal protein becomes a prions it becomes dangerous जेतेबेले नॉर्मल प्रोटीन अच्छी ये एमती किसी हार्मफुल नुहे है किंतु जेतेबेले से कौन जाए प्रायन्स को कन्वर्ट हो जाए सेतेबेले से कौन आम डेंजर हो जाए है एंड कैन कॉज सेभराल मोस्टली फाटाल न्यूरो डिजेनेरेटिव ब्रेन डिजीज सेतेबेले से किसी आम ब्रेन डिजीज क्रिएट करि थाए है मोस्टली आम जदि कैटल मान पाखे देखा मेड काउ डिजीज है ह्यूमन पाखे देख जोटा हूँ क्रेओडफेल्ड जैकब डिजीज यही प्रकार सब डिजीज देखा जाए है तो देखो वंस prions enter the brain they force the normal cellular protein to begin folding into the abnormal shape है this destroy the neuron and the eventually lead the brain to becomes riddle with hole है से जगह तापर ब्रेन को से होल कर दिए देखो केते प्रकार डेंजर है this sponge like brain consistency is where the medical name for the mad cow disease came from bovine spongiform encephalopathy ताको बोली कहा जाए है B.Sc है Prions also cause the condition of scrapy है a degenerative disease affecting the nervous system जोटा कि nervous system को affect करता है कहार सीप हो बा गट हो है तापर जदि आम देखा प्रायन्स कैन कॉज ए फ्यू ह्यूमन डिजीज है जमती वन डिजीज हूँ कुरु है इज एसोसिएट विथ द जोटा आम कहवा कानिबालिज्म है एसोसिएट विथ जी कानिबालिज्म जो मैंने कानिबल अच्छा से पाखे देखा जाए कुरु प्रकार डिजीज है तो यहाँ गोटे तुम जान लो आउ मध्य देखी तो प्रायन्स में ऑल्सो हैव द रोल इन द Alzheimer disease है एटा मध्य मन रखी दो है there is no treatment for any Prions caused disease a 2015 study in conclude that multiple system atrophy है MSA a rare human neurodegenerative disease is caused by the misfolded version of the protein called the alpha synuclein and is therefore also classified
आज ए प्रायन डिजीज। तो प्रायन डिजीज को से जगह क्लासीफाए करदेला 2015 रे है। सेवेरल ईस्ट प्रोटीन हैव ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग जोटा प्रायोनोजेनिक प्रॉपर्टीज है। तेणु आम जब कहीपर ये जगह कौन यू कैन नॉट डेस्ट्रॉय प्रायन्स बाय स्टेरिलाइजेशन और बाय कुकिंग। आम ना डेस्ट्रॉय कर स्टेरिलाइजेशन द्वारा डेस्ट्रॉय कर ना कुकिंग द्वारा डेस्ट्रॉय कर। प्रायन्स आर रेजिस्टेंस टू हीट जेहेतु से हीट को मध्य रेजिस्टेंस कर कैपेसिटी अच्छी रेडिएशन केमिकल्स सो दे आर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। तेणु से माने अनस्टॉपेबल ताको आमे कौन सी हालत रे अटकई पारिबा नहीं है। द बेस्ट वे टू एवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ प्रायन्स इन ह्यूमन एंड द एनिमल्स इज टू प्रिवेंट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू फ्रॉम गेटिंग इनटू द फूड सप्लाई और ऑन टू मेडिकल इक्विपमेंट है। आवर रिसर्च इवेंट टर्न ऑफ ए नोबेल कॉल्ड द जॉम्बी एटोप्सी। तेणु आम देखो जॉम्बी एटोप्सी बोली है। तापर देखो कॉज ऑफ हाइपोथेसिस है सॉरी कॉजल हाइपोथेसिस कौन whether prions cause disease or are merely a symptom caused by the different agent is still debated by the minority और रिसर्चर तांको द्वारा एपर्यंत भी मतलब गोटे रिसर्च होना चली है। दिन को दिन से रिसर्च कर द फॉलोइंग सेक्शन डेस्क्राइब सेवेरल हाइपोथेसिस किसी सेवेरल हाइपोथेसिस जहाँ विषय आम बर्तमान पढ़ा है। प्रथम देख देती कौन प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस। तो प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस कौन प्रायन्स टू बी डिस्कवर ऑफ द प्रायन्स इट वाज दो that all pathogen use nucleic acid to direct their replication. The protein only hypothesis state that ये कौन कहला that a protein structure can be replicated without the use of nucleic acid है। से nucleic acid रो यूज बिना मध्य रेप्लिकेट करि पारे है। दिस वाज इनिशियली कंट्रोवर्शियल एटा कंट्रोवर्शियल भी होता आज इट कॉन्ट्राडिक्ट द सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी व्हिच डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड एज ए सेंट्रल फॉर्म। ये कंट्रोवर्सी कहीं कला कहीं आम जाचु जे न्यूक्लिक एसिड हूँ आम सेंट्रल फॉर्म रेप्लिकेशन किंतु ये कहला जे प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड दरकार नहीं से निजे निजे रेप्लिकेट कर दिए। तेणु यहाँ गोटे कंट्रोवर्सी क्रिएट कला। नेक्स्ट जो आम देखा हूँ जेनेटिक फैक्टर कौन ए जीन ऑफ ए नॉर्मल प्रोटीन हैज बीन आइडेंटिफाइड द PRNP जीन इन ऑल inherited cause of Prions disease there is a mutation in the PRNP gene है। many different PRNP genes mutation have been identified and these protein are more likely to fold into abnormal prions। तो टिके तुम जस्ट खाली ताको लिखि दियो है बेसी किसी डेस्क्राइब करवा तो दरकार नहीं टिके लिखिदेले भी चलो। मल्टी कंपोनेंट हाइपोथेसिस कौन इन 2012 सुपाटापोन एंड द कोलिग्स प्यूरिफाइड द मेम्ब्रेन लिपिड जोड़ा हूँ आम कौन फॉस्फाडेल इथानोलामाइन है इथानल अमाइन है बहुत लंबा नाट है मुहरे पशु भी नहीं। आज ए सॉलिटरी एंडोजिनस को फैक्टर कैपेबल फॉर फैसिलिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइटर रिकॉम्बिनेंट प्रायन्स जोड़ा डिराइव फ्रॉम द मल्टीपल प्रायन स्टेन है। दे ऑल्सो रिपोर्ट दैट द कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द इन्फेक्शियस कन्फर्मेशन ऑफ द PSC है एंड दैट कोफैक्टर मोलिक्यूल डिटेक्ट द स्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द इन्फेक्शियस प्रायन्स है। नेक्स्ट होते हेवी मेटल पॉइजनिंग हाइपोथेसिस। तो ये कौन कहला रिपोर्ट सजेस्ट दैट इम्बालेंस ऑफ द ब्रेन मेटल होम्योस्टैटिस मे बी कॉज ऑफ PRPSC एसोसिएटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी। अर्थात से किसी पॉइजनस अच्छे आम न्यूरो पॉइजनस ये सब हो पारे थ्रो द अंडरलाइंग मेकानिज्म आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन। तापर जो आम नेक्स्ट देखा
भाइराल हाइपोथेसिस कौन तो भाइराल हाइपोथेसिस होची फॉर मोर देन ए डिकेड वेल जोटा यूनिवर्सिटी न्यूरोपैथोजेनिस्ट है लौरा मेनुलिडिक Lidis has been proposing that Prions disease are caused instead by an unidentified slow virus. In January 2007, she and her colleagues published an article reporting to have found virus in 10% or less of their scrappy infected cell is culture. तापर भिरिन हाइपोथेसिस कौन कला भिरिन हाइपोथेसिस कहला जे TAC एजेंट इज ए फॉरेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट बाउंड टू PRP। तापर देखो स्पाइरोप्लाज्मा हाइपोथेसिस कौन कहला स्पाइरोप्लाज्मा हाइपोथेसिस इज ए सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया related mycoplasma which something may be a cause of TAC है the lack of the cell wall mean they are not susceptible to the conventional antibiotics such a penicillin which target cell wall synthesis है तापर जब आम देखा नेक्स्ट कौन देची जे नेक्स्ट देची जोटा एसिनेटो बैक्टर ऑटो इम्यूनिटी हाइपोथेसिस तो ये कौन कहला व्हिच समथिंग इज कॉज ऑफ TAC से कहला टू रैप ऑफ वायरसेस भिरोइड एंड प्रायन्स ऑल क्रिएट हेबक इफ दे एंटर टू योर बॉडी जदि आम बॉडी को से एंटर कला माने हमको किसी ना किसी से डिजीज क्रिएट करेबो ही करेबो है दे ऑल आर द सेम गोल समस्त को सेम गोल टेकिंग ओवर ए लिविंग सेल एंड द वे ऑफ पायरेट माइट हैव ओवर द शिप बट द वे दे अचीव दैट गोल इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर इच किंतु समान को जो अचीव अच्छी गोल आम से डिजीज क्रिएट कला तो यहाँ थिला आमर प्रायन्स विषय तो आम पढ़ले कौन भाइरस सरला तापर आमर भिरियन भिरोइड प्रायन्स आउ भिरियन आउ भिरोइड रो डिफरेंशिएशन एतकी आम सरीगला तो नेक्स्ट चैप्टर आम गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करवा नेक्स्ट क्लास रे आज तो एतकी थैंक यू।